Assalamu alaikum ji. I am Biha Khatoon Jafri, roll number 53, and today I'll be giving a very short and concise presentation on the parasite Toxoplasma gondii, and that would be on the behalf of roll numbers 51 to 55. Let's begin. Okay, so I've added a picture of my own cat in the very beginning to basically solidify the idea that Toxoplasma has a lot to do with cats. And we'll see how that basically happens as we go through the following slides. These are the objectives. We won't be wasting time reading through these, but we'll just, go over these as we progress through the presentation. All right, so what is Toxoplasma? It's a parasite. It's an intestinal coccidia, and it belongs to this phylum Epicomplexa, which is inclusive of some very, very interesting organisms. For instance, Plasmodium, for instance, Cryptosporidium, and Toxoplasma gondii itself, and many more organisms as well. All of these are basically obligate intracellular parasites, so they need a cellular environment to survive. The disease that Toxoplasma causes is toxoplasmosis, and we will try to dissect this disease in complete depth as we progress through the slides. And very important epidemiological stat to know about Toxoplasma is that it is the most prevalent parasite in the global human populace. Okay, so ये structure हमें जो screen पे नजर आ रहा है, this is basically of Toxoplasma. It's its ultrastructure. We can very well appreciate the nucleus, the endoplasmic reticulum, the Golgi, and the mitochondria. We know about these, we have read about these, but there are some structures, some names जो शायद हम इतने अच्छे तरीके से जिनके बारे में नहीं जानते या इतना commonly उनको नहीं सुनते. उसमें we have rhopteres या rhopteries, these elongated orange structures that you see. You can also check out these tiny light blue micronemes. You can clearly appreciate a ring at the top, which is the apical ring, and then a basal ring at the broad base as well. ये जो rhopteres और micronemes हैं, ये basically secretory organelles होते हैं. ये कुछ ऐसे substances secrete करते हैं which help Toxoplasma with motility, adhesion, and invasion into the host cell. जो apical ring और basal ring है, these are very important structures because ये hallmarks हैं पूरे phylum Epicomplexa के. They're found in all of these structures. And these are collectively called mTOCs or mTOCs, basically microtubule organizing centers, and this is exactly what they do. They help in the organization of the microtubules within the cellular environment of Toxoplasma. So in addition to rhopteres, micronemes, apical and basal ring, we can also check out the pellicle or pellicell over here. Pellicell is basically a composite structure, and it consists of the plasma membrane and the inner membrane complex. So we have a nucleus, we have the organelles that we are well aware of, the Golgi, the reticulum, the mitochondria. In addition to these, we can also check out the rhopteres, the micronemes, the apical basal rings, which are basically mTOCs, and the pellicell as well. Now, what is toxoplasmosis? किसी भी डिजीज के बारे में जानने से पहले इम्पॉर्टेंट होता है कि हम ये देखें कि उसकी ट्रांसमिशन कैसे होती है. तो ट्रांसमिशन ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा occurs via 3 important routes. सबसे पहली चीज़ है अंडरकुक्ड मीट, उसके ज़रिए से ये ट्रांसमिशन इसकी हो सकती है. दूसरी चीज़ है कंटेमिनेटेड वाटर. नाउ कंटेमिनेटेड विद व्हाट? वो oocysts हैं इसकी, या वो इसके टेकिजॉइड्स, स्पोरोजॉइड्स हैं, या ब्रेडिजॉइड्स हैं, व्हाटएवर. वो हम देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है जो कंटेमिनेट करती है सोर्सेज को, उनकी कंजम्पशन से फिर इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी बढ़ती है. एंड देन वी हैव दिस इज वन ऑफ द टॉर्च इन्फेक्शंस, तो ये ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन भी रखता है. सो अंडरकुक्ड मीट, कंटेमिनेटेड वाटर, ट्रांसप्लेसेंटल ट्रांसमिशन. These are different forms of Toxoplasma. We can check out the oocyst. What exactly is a oocyst? वो cyst जिसमें zygote हो उसको हम oocyst कहते हैं. Toxoplasma की 2 तरह की oocysts होती हैं, unsporulated and sporulated. We'll talk about these. We can check out bradyzoids, tissue cysts, and techizoids. This slide basically shows the sporulated cyst of Toxoplasma gondii. Now, the difference between a sporulated and an unsporulated cyst is basically this कि जो unsporulated cyst है इसमें कोई spores नहीं है. ये जो slide आप देख रहे हैं ये एक sporulated cyst है. इसके अंदर आपको 2 sporocysts नजर आएंगे, and each sporocyst further contains 4 sporozoids.
Now, a very important part of this entire presentation has to be the cycle. देखिए, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई बेसिकली दो होस्ट्स में एग्जिस्ट करता है. एक इसका डिफिनेटिव होस्ट है और एक इसका इंटरमीडिएट होस्ट है. याद रखिए, डिफिनेटिव होस्ट वो होस्ट होता है जिसके अंदर द ऑर्गेनिज्म कंप्लीट्स इट्स सेक्सुअल साइकिल. वो होस्ट जिस पे द ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स फॉर द टर्मिनेशन ऑफ इट्स साइकिल इज नोन एज द इंटरमीडिएट और द सेकेंडरी होस्ट. In the case of Toxoplasma gondii, we see a lot of pictures of cats. उसकी वजह ये है कि इसका जो definitive host है, that is a cat. And इसका जो intermediate host है, that can possibly be any warm-blooded animal, कोई भी mammal, including humans. And let's just talk about the cycle. This is one of very good pictures of the life cycle of Toxoplasma. It's kind of complicated. So this, I found this one to be, kind of precise and easy to understand. सबसे पहले, the definitive host, which is the cat in this particular case, is going to get the oocyte into its body, the oocyst into its body, via some sort of infected, mammal or creature that it feeds upon. For example, अगर कोई rodent है जिसकी बॉडी में वो स्पोरुलेटेड oocyst प्रेजेंट है और कोई कैट उस पर फीड करती है, तो वो जो स्पोरुलेटेड oocyst है, दैट्स गोइंग टू गेट इनटू द बॉडी ऑफ द कैट. वंस इनसाइड द डिफिनेटिव होस्ट, व्हाट हैपेंस इज कि एक्सिस्टेशन होगी आपके स्मॉल इंटेस्टिन में, फिर उसके बाद आपके पास ब्रेडोजॉइट्स आएंगे, देन यू विल गेट द गेमीटोसाइट्स विल फ्यूज, दे विल प्रोड्यूस द oocyte, और फिर वो अनस्पोरुलेटेड oocyst जो है, that would be passed into the feces of the cat. याद रखिए, ये जो unsporulated oocyst है, जिस भी fecal matter में जहाँ भी ये present है, say for instance soil में present है, in a duration of about 1 to 5 days इसकी sporulation होती है, it becomes a sporulated oocyst, और उसके बाद इसके पास दो particular routes हैं to get into its intermediate host, जहाँ पे completion of cycle will basically occur. वो दो क्या रूट्स हैं? पहला उसमें रूट ये हो सकता है कि कोई कंटेमिनेटेड वाटर सप्लाई थी या कोई कंटेमिनेटेड वेजिटेबल्स थे जिसको कंटेमिनेटेड विद द यूसेस, जिसको आपके सेकेंडरी होस्ट ने कंज्यूम किया. या दूसरा हमारे पास ये रूट हो सकता है कि बीच में कोई रिजर्वॉयर हो. फॉर एग्जांपल, कोई सॉइल है जिसके ऊपर ऐसा फीकल मैटर पड़ा है विच इज़ बेसिकली कंटेमिनेटेड विद द स्पोरुलेटेड oocyst ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा गोंडियाई, और उस पर कोई एनिमल ग्रेज कर रहा था, and you picked up that animal, you slaughtered it, and you ate that animal. और उसका जो मीट था वो रॉ था, that was undercooked. तो आपकी बॉडी में ये oocyst पहुंच जाएगी via these two routes. Once inside the human body, excitation होगी again small intestine में, bradyzoites release होंगे जो उसकी slow growth forms होती हैं, वो sporozoites में convert होंगे, they're going to infect the intestinal mucosa, and then they'll be converted into the tachyzoites form जो possibly सारे organs में जाके seeding होगी उनकी, and this is how the cycle gets completed. And the important thing here is that man is basically the dead end of this cycle, यानी ह्यूमन फीसेस में ये ऑर्गेनिज्म पास नहीं होता, यहीं पे साइकिल कंप्लीट हो जाती है. सो इन अ नटशेल, यू हैव अ डिफिनेटिव होस्ट व्हिच इज अ कैट, एंड यू कैन हैव एनी वार्म ब्लडेड एनिमल, एनी मैमल, including humans, as its intermediate or secondary host. All right. So as this is a assignment or a presentation of community medicine, तो important है कि हम इसके epidemiological aspect को भी चेकआउट करें. जैसा कि हमने पहले आपसे बयान किया कि ये बेसिकली दिस इज द मोस्ट प्रेवलेंट पैरासाइट in the human population, and this is found across the globe, including the carnivorous and herbivorous mammals. जितनी भी population groups को investigate किया गया for its presence, it was found in them. इसकी जो prevalence है, that is highest in the tropical regions and lowest in the cold regions. Because of what particular reason, we don't know. और United States में इसकी जो एक ट्रांसमिशन है या इसकी जो एक सोर्स है, that is basically undercooked or raw pork and lamb. Again, in this slide we have solidified the idea that it is found very commonly in the tropical areas, particularly in the Amazonian area. और यहाँ पे जो ये severe infectious syndrome cause करता है, उसमें lungs की involvement is quite substantial. It's another map showing the global status of Toxoplasma gondii
प्रेवलेंस यहाँ पे जितने भी डार्क पर्पल जोन्स हैं उसमें 60% से भी ज़्यादा प्रेवलेंस है. पिंक जोन्स में 40 to 60% है. तो येलो जोन्स आप देख सकते हैं वहाँ 20 to 40% है, और ब्लू जोन्स में 10 to 20%, एंड देन इन द लाइटर ब्लू जोन्स इट्स इवन लेस देन 10%. जो वाइट एरियाज है वहाँ पे it yet has not investigated in the human populace. Alright, अब toxoplasmosis जो disease का sequel है उसको हम discuss करेंगे into the immunocompetent individuals, immunocompromised, and the pregnant women. And we obviously know कि इसमें से जो high risk groups हैं वो immunocompromised हैं और pregnant lot है. जो immunocompetent है उसके 60% cases में it's asymptomatic. 40% cases में अगर symptoms आते हैं तो they are just like the regular flu-like symptoms. Immunocompromised के अंदर कोई HIV का पेशेंट है, एड्स का पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, उसके अंदर बेसिकली इज गोइंग टू कॉज एनकेफ्लाइटिस, ये ब्रेन एब्सेसिस कॉज करता है. और जब हम उनका CT कराते हैं तो उस पर हमें ये रिंग एनहांसिंग लेजन्स नजर आते हैं. When it comes to pregnant women, obviously there is this factor of transplacental transmission. इसमें a very important fact to bear with is कि अगर इन्फेक्शन प्रेगनेंसी के दौरान हुआ है, then only then it would be transmitted to the fetus. If the mother was infected before pregnancy and the parasite is not active during the gestational period, तो इसकी transmissibility नहीं होती है. During pregnancy, techozoids are going to colonize the placenta, they'll cross the barrier, and they'll reach the fetus, causing death in about 30% of the cases. इसमें एक और important चीज़ ये है कि gestational age has a role to play in this. आपकी जो transmission rates हैं, they are lowest in the first trimester and highest in the third trimester. Again, at the end, we've added this tiny note, endorsing the very idea कि pregnancy के दौरान infection होगा तो transmissibility होगी, before pregnancy अगर है उसकी transmissibility नहीं होती. What would be the repercussions of the parasitic infection transmitted to the fetus? Abortion हो सकता है, stillbirth हो सकती है, और congenital toxoplasmosis हो सकता है. All of these features listed on the screen are basically part and parcel of the congenital toxoplasmosis. ये जो picture हमने दिखाई है ये फंडोस्कोपी के जरिए से ली गई एक तस्वीर है जो कि chorioretinitis को indicate कर रही है. This is basically posterior uveitis to be more precise. It can cause blindness. इसके अलावा intracranial calcifications होती हैं, hydrocephalus, seizures and deafness is also a part. This is a child with congenital toxoplasmosis, and you can clearly appreciate the hydrocephalus in this picture. What are the treatments? हम treatment को 3 groups में discuss करेंगे. Immunocompetent में क्या करना है, immunocompromised में क्या करना है, and what about the pregnant women? For healthy people, हम पहले बता चुके हैं कि 60% केसेस में तो सिम्टम्स ही नहीं आते, पीपल आर एसिम्प्टोमेटिक. अगर सिम्टम्स आते हैं तो यू कैन गो फॉर दिस ट्राइड ऑफ ड्रग्स जिसमें यू गिव दीज एंटीफोलेट्स, जिसमें पायरियोमेथामीन है, सल्फाडायाजीन है, एंड वी वेरी वेल आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ये बोन मैरो सप्रेशन कॉज कर सकते हैं. तो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट हम रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ फॉलिक एसिड देते हैं, विच इज़ फोलिनिक एसिड. सो फॉर हेल्दी पीपल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती. अगर एसिम्प्टोमेटिक अगर सिम्टम्स आ रहे हैं तो फिर यू कैन गो फॉर दिस. For the immunocompromised, you again will go for sulfadiazine, pyrimethamine, and a very important thing to bear with is that prophylaxis के लिए you have to go with trimethoprim, sulfamethoxazole, which is cotrimoxazole. Pregnancy के अंदर again gestation की duration पे depend करेगा कि आपने क्या treatment देना है. अगर आपकी serology was positive before 18 weeks of gestation तो transmission को रोका जा सकता है. It can be prevented. आप macrolides देते हैं जैसे spiramycin या spiramycin. If serology came out to be positive after 18 weeks of gestation, तो फिर आप triple scheme की तरफ जाएंगे, which is basically inclusive of pyrimethamine, sulfadiazine, and again folinic. इस chart में basically आपकी जो dosages हैं और जो उसका detailed description है वो mentioned है. First 18 weeks spiramycin या spiramycin, and after 18 weeks triple scheme जिसमें you'll give away the pyrimethamine, sulfadiazine, and leucovorin, which is folinic. Finally, prevention of toxoplasmosis के लिए क्या करना है जी? You have to wear gloves when you garden. Raw या undercooked meat मत खाइए. Cook your food properly before you eat it. Wash your kitchen utensils thoroughly. Fruits, vegetables, wash them properly as well. Do not drink unpasteurized milk. Litter boxes का ख्याल रखें. Screening करें, and if you have a pregnant woman around, then make sure that she keeps away, from the cat litter boxes.
This picture was basically taken from Sketchy Micro to quickly go over and review what we've done, so far in this. We can see a pregnant woman, and we can see the cat with a cane, which basically indicates an immunocompromised, creature. ये हमें दिखाता है कि हाई रिस्क इंडिविजुअल्स आपके प्रेग्नेंट वेमेन हैं और आपका जो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज लॉट है वो है. इस इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज कैट पे आप एक टर्बन देख सकते हैं रेड कलर की, विच इज़ बेसिकली इंडिकेटिव ऑफ इनकेफ्लाइटिस, और उसमें एक नीडल नज़र आ रही है. ये नीडल इंडिकेट करती है कि यू कैन बेसिकली डिफरेंशिएट द इनकेफ्लाइटिस ऑफ टॉक्सोप्लाज्मोसिस from that of CNS lymphoma via a needle biopsy. Then you can see another cat holding the torch, which indicates that this is one of the torch infections. So that is why it causes, the congenital toxoplasmosis. You can see some other cats, on the other side, जहाँ पे intracranial calcification और seizures के concept को हमने endorse किया है. So this is just a revision slide. So yep, that's it. Thank you very much for sticking around, everyone. Corona is not yet gone, so keep practicing the recipes, and thank you very much. Good luck.